Today we will start the plane mirror. How will generate the plane mirror? First of all, plane mirror which will create it when we will take a glass, when we will take a glass and polished by silver coating or lead sulfide behind the glass के पीछे. How will create it? Suppose this is a simple glass, then we will polish behind it silver coating, then this will be create a mirror. The normally of the plane mirror, normally मतलब इसके just perpendicular, we will draw a line perpendicular. This will be called normal. इसको हम कहते हैं normal. Basically normal will create it. Suppose if there have a curve shape mirror, so what is the normal at that point? इस point normal क्या होगा? Then we will draw a tangent. We draw a tangent and perpendicular to the tangent we will draw a normal. Perpendicular to the tangent we will draw a normal. If any shape they have created, any shape, suppose this will be and this will be, what should be the normal at that point P? So what will be? We will draw a tangent and then normally of the tangent it is called normal. If suppose the mirror is in form of zigzag, then there have many shape. So at point A, at point B, at point C, what is the normal? So we will draw a normal at point A. So how will draw? First of all, we will draw a tangent passes through the point and perpendicular to the tangent, that will be the normal at point A. Similarly B point पे we will draw a tangent at point B and normal of the tangent is called, perpendicular to the tangent is called normal at point B. Suppose this is the point C, we will draw a tangent at point C, again we will draw a tangent and perpendicular to the line, that is the normal. So at point A normal is NA, point B normal is NB, point C normal is N. This is the simple plane mirror. Then in this case normally we will draw a line. Suppose this is, again repeat, then we will take a glass and silver coating behind them and lead sulfide coating and perpendicular to the mirror is called normal. And this is the first type, normal. We will draw a curve shape, perpendicular line. This also any point we will draw a curve shape. If you have given a curve shape, then we will draw a tangent के perpendicular जो line होगी normal कहलाएगी. Any shape. Now in the next lecture we will read the law of reflection. Law of reflection. Basically there are two law of reflection. Number 1, incident ray, reflected ray,
and normal lies on the same plane. First law. Second law, angle of incident ray which will be equal to the angle of reflection ray. Then how we'll draw? Suppose we will take a plane mirror. This is the, अभी कोई मिरर नहीं है जब तक इसके पीछे पॉलिश ना कर दें. नाउ एट सपोज वी टेक ए पॉइंट ए. इस पॉइंट पर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, एनी लाइट, सनलाइट, एनी विच इज एक्ट ऑन अ पॉइंट ए. इस रे को बोलते हैं, व्हाट द नेम ऑफ दिस रे? दिस वन. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. जिस पॉइंट पे रे गिरेगी उस पॉइंट पे विल ड्रॉ नॉर्मल. डेट इज पॉइंट कॉल्ड नॉर्मल एंड उसी पॉइंट से रे विल बी रिफ्लेक्ट. दिस विल बी रिफ्लेक्ट. सपोज दिस एंगल आई, this angle is R. So angle according to the first law, incident ray, reflected ray, this is ray is called reflected ray. This point is called normal. Incident ray, normal, reflected ray lie on a same plane. Plane किसे कहते हैं? जैसे ये पेपर. This is so इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये प्लेन पे लाई करते हैं. तो ये फर्स्ट लॉ आपका हो गया. सेकंड लॉ हो एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हाउ कैन सी दैट? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड दिस एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर बोथ विल बी इक्वल. एंगल आई और एंगल आर बोथ विल इक्वल. देन वी कैन से सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा. तो इफ एंगल आई इज 30 डिग्री देन एंगल आर ऑटोमेटिकली 30 होगा. किसके कोड से? बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर law of reflection. Find the angle of reflection if angle of incident is given is 35 degree. Draw the ray diagram of plane mirror. So first of all, again repeat the question. Find the angle of reflection if the angle of incident will be 35 degree. Then I will draw the diagram. Solution. Suppose we know this is the plane mirror and this ray is called incident ray, and normally this is point is called normal point. एंगल हमेशा हम देखते हैं कहाँ से? नॉर्मल से. तो नॉर्मल से एंगल आपको दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री. आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल बी एंगल? एंगल आल्सो विल बी नॉर्मल से ड्रॉ करेंगे 35 डिग्री. तो एंगल आर कितना होगा? 35 डिग्री. अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है सेकंड पार्ट में, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर.
मिरर से रिफ्लेक्शन बताइए। तो मिरर से क्या होता है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये मिरर से रिफ्लेक्शन है। तो टोटल एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 35, तो व्हाट विल रिमेन, तो फ्रॉम मिरर angle will be 90 minus 35, it will be 5, and here will get 8 is 55 is the answer.